guys, welcome back to my channel. अगर आप मेरे channel पर new है then hi, my name is Mimi. Today we will be talking about AHAs and how to use AHA in our skincare routine for clear glowing skin. आप लोगों को पता होगा AHA stands for alpha hydroxy acid which is a chemical exfoliator. अभी different type of skincare products में AHA available है and you can use AHA in different skincare steps as well. But the step that we will be covering today is a basic step in our skincare routine and everybody has that step in their skincare routine. So अगर आप पूछे कि AHA कैसे काम करता है तो हमारे स्किन के सबसे ऊपर होता है एक लेयर ऑफ डेड स्किन सेल्स और उसके ठीक नीचे होता है लेयर ऑफ न्यू स्किन सेल्स. सो AHA और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड उन दोनों लेयर को अलग करने का काम करता है. मतलब जो डेड स्किन सेल्स का लेयर है उसको हटाने का काम करता है ताकि जो न्यू स्किन सेल्स का लेयर है वो ऊपर आ सके. एंड बाय रिमूविंग द लेयर ऑफ डेड स्किन सेल्स AHA हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ डल स्किन, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स एंड स्टफ. अगर आप एक बिगिनर है या फिर अगर आपने इससे पहले AHA यूज किया है बट उतना ज्यादा बार यूज नहीं किया है देन आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद अ लोअर परसेंटेज और अ माइल्डर AHA. एंड बाय माइल्डर आई मीन यू कैन स्टार्ट बाय यूजिंग प्रोडक्ट दैट कंटेन्स fruit derived AHAs because those AHAs are gentler on the skin and once your skin starts getting used to the AHAs then you can slowly higher the percentage of AHA in your skincare routine. So the step that I was talking about, the skincare step that in which I will be using AHA today is cleansing. So if you guys want to know more about it then continue watching. So to cleanse my face, the face wash I'll be using today is by Aminu. It's their Clarify Plus Brighten AHA face wash. This face wash has 5 natural AHAs that help treat rough skin and uneven skin tone. This face wash is ideal for skin with dark spots, discoloration, uneven skin tone and texture. AHAs के अलावा भी इस face wash में मौजूद है licorice, gentle apple amino acid, mulberry and sugar complex. All of these ingredients together help remove excess oil and surface impurities from the skin. The face wash supports natural cell turnover and helps improve the skin's hydration. Now let me show you the texture of the face wash. The face wash has a thick texture kind of like jam which makes it easier to spread it across the face. And talking about the brand Aminu, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, the packaging of the brand is super neat and also I really like how on the packaging they mentioned that we need to trust the process while doing the right skincare. We also need to trust the process because skin doesn't go from 0 to 100 overnight. We need to eat well while doing the right skincare. And also on the packaging they mentioned that because this face wash contains alpha hydroxy acid that can make our skin sensitive to the sun, so we need to wear sunscreen every day, which is absolutely correct. And also this face wash is free from microplastics, synthetic fragrances and ethoxylated ingredients. The face wash has a natural fragrance in it and because of the texture it is super easy to use as well. जब आप इस फेस वॉश को यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा टिंगलिंग आपको फील हो सकता है बट दैट इज़ टोटली नॉर्मल क्योंकि इस फेस वॉश में AHA मौजूद है जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो उसके वजह से थोड़ा सा आपको टिंगलिंग फील हो सकता है. एंड दिस फेस वॉश इज़ जेंटल इनफ टू यूज़ ट्वाइस अ डे. If you want a little bit of heavy cleaning then after applying the face wash you can leave it on for 5 minutes ताकि जो AHAs है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले आपके स्किन पर वर्क करने को एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर वॉशिंग माई फेस आई हैवंट यूज्ड एनी स्किन केयर येट एंड माई स्किन ऑलरेडी फील्स क्लीन, फ्रेश एंड सॉफ्ट. And after using the Aminu AHA face wash, you will see for yourself how bright and soft your skin looks and feels. So definitely try out the Aminu AHA face wash अगर आपको dark spot, pigmentation, rough skin, dull skin का problem है तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और एक दूसरी वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्द आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।